Organizers went all in on entertainment. They made it into a spectacle, and the old-fashioned traditionalists find this abhorrent. To them, that's not cricket. Cricket is theatre, where, you have intellectual discussions as to where the ball is played and so on. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेश पेश होंगे। वेलकम टू ट्रू लिक्स। आज हम आपके साथ वीडियो देख लेंगे, उसका टाइटल है हाउ इंडिया क्रिएटेड एन $11 बिलियन क्रिकेट एम्पायर। देखेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप इनको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। Forget everything you think you know about cricket. Welcome to the Vivo Indian Premier League. All across the lawn. This is the Indian Premier League. It's the fastest growing sports league in the world, ahead of the NFL, the NBA, MLB, and English Premier League. Each NBA game is worth $2 million, but a single IPL game is worth more than $15 million. The IPL has turned into a global cricket phenomenon that runs for 2 months with 10 franchises, 74 matches, and more than 500 million viewers. And unlike the other big sports leagues like the NFL, NBA, and Formula One, which were founded decades ago, the IPL only started in 2008. So how did India build this juggernaut? Back in 2007, cricket had die-hard fans, but attracting new viewers and investment was a struggle. The traditional heritage type of cricket, Test cricket, took 5 whole days per match, and even the shorter version, the one-day international, lasted 7 to 8 hours. But in 2003, England introduced a fast-paced version of cricket called T20. In T20 cricket, each match takes about 2.5 hours, similar to the time span of other popular team sports, and it became an instant hit. That's hit very, very well. All the way again. Brings up. After India won the 2007 International T20 World Cup, Lalit Modi, the vice president of the Board for the Control of Cricket in India, saw an opportunity to kill a few birds with one stone. See, Modi had a few problems. The new upstart Indian Cricket League threatened BCCI's authority and started poaching big players. It needed to be crushed. Modi had also seen the success of huge franchise models in the US and wondered why they didn't have a similar money-making cricket franchise, especially in India, where cricket is more like a religion than a sport. So Modi pulled the trigger, and in 2008, the Indian Premier League was founded. A T20 cricket league with 8 teams that would be played over just 2 fast-paced months. New teams were created to play in a franchise format and auctioned off to new owners on January 24, 2008 for a total of $724 million, with each team based in a different Indian city. It wasn't just a shorter format that the IPL committed to. The organizers went all in on entertainment. They made it into a spectacle, and the old-fashioned traditionalists find this abhorrent. To them, that's not cricket. Cricket is theatre, where, you have intellectual discussions as to where the ball is played and so on and so forth. Here they said, no, you don't need all that. You want entertainment. You want to rival what the cinema offers you, what any other form of entertainment offers you. This translated into instant success. In their first season, the league garnered almost 1.2 billion viewers and made more than $100 million in revenue. This was a more than 20x increase in viewership. Historically, the old format of cricket had struggled to get 50 million viewers. Become something which is more sold as a product, has more things going on for the viewer when they come to the ground. Oh, and remember the Indian Cricket League? It closed after 2008. Modi won. There is one simple reason that the IPL is a money-making machine: audience. The IPL promises even more entertainment, even more action, and even more excitement. India has a population of 1.4 billion that will soon overtake China for the largest in the world. It also is one of the fastest growing middle classes. That means lots of eyeballs and lots of potential ad revenue. 80% of the money that the IPL makes comes from central revenues that are negotiated by the BCCI. That includes league-wide sponsorships like the one with Tata, and the league's central media rights agreement with broadcasters like Star India. In 2022, those rights were sold for over $6 billion. $3 billion came from Disney-owned Star India for TV rights, and another $3 billion came from Viacom 18 for streaming rights.
split across just 74 matches, makes each one worth over $15 million. And as views rise, the BCCI can charge more and more to the broadcasters, who will make more on their side from increased ad sales and subscriptions from a bigger audience. That's why the IPL is such a big deal. It combines an exciting format of a popular sport in a country that has an exploding population. And it's not just India. In 2020, the IPL began broadcasting to more than 120 countries, including the United States, United Kingdom, and South Africa. This also means that the franchises make a lot of money. BCCI keeps only 50% from the media rights deal. The other 50% is split between just 10 franchises. An average IPL match averages 30,000 people in attendance. This allows ticket sales to account for as much as 15% of each team's revenue. Rounding out each team's revenue pie chart are individual team sponsorships, merchandise, and prize money. Bats, bails, headgear, and team kits. Everything is sponsored, with some franchises like the Chennai Super Kings making a lot more from sponsors because they have a bigger fan base. There's a powerful virtuous cycle here. By playing the most exciting format and garnering the largest audiences, the IPL makes the most money, which means they attract the best players. Superstar Virat Kohli's salary and winnings for 2019 were just $4 million as he played for the Royal Challengers of Bangalore. But his IPL stardom allowed him to bank an extra $21 million through endorsements. This led the IPL to bring in international stars like A.B. de Villiers, David Warner, and Chris Gayle to join up. But all these factors and the big money led to tensions. Test cricket was traditionally more respected than T20 cricket. The classic cricket format was the ultimate test of a player over 5 days. But IPL money was turning heads. In 2007, only half of players said they'd still reject a national contract to play T20 cricket. And as the IPL drew more viewers, players, and broadcasters, real discussions began about whether Test cricket would be reduced to just a few big countries. It seemed like the IPL was going to crush everything in its way. Even when COVID hit, despite stadiums losing out on ticket revenue, there were still millions and millions of TV viewers. The franchise values doubled in 2020. And the success of the T20 League in India got people hungry for more. IPL franchise owners are now looking to buy T20 cricket franchises in other countries like South Africa, hoping to replicate the IPL's success. Leagues have started in the Caribbean, Australia, Pakistan, and other countries. It also arrived in the US as Major League Cricket. The growth of the Indian Premier League has been insane. In 2009, 1 year after its founding, the average IPL franchise was valued at $67 million. 14 years later, the value of those franchises has exploded to more than $1.1 billion. That's an annualized growth rate of 24%. For comparison, over the past 13 years, the growth rate of NBA teams has been 16% and NFL teams has been 10%. And the IPL isn't slowing down. Who knows if those leagues outside of India will be successful, but you can feel confident that the IPL will continue to grow in popularity and the nation of India will also continue to succeed. Check out our past video breaking down why the nation of India is poised to win the 21st century. देखा आप लोगों ने वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के बहुत मज़ा आया। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और ये एक ऐसी लीग है जो कि बास्केटबॉल और बाकी और बहुत सारे स्पोर्ट्स को भी पीछे छोड़ती है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो तब इसके $724 मिलियन के इसके जो आई थिंक टीम्स की ये बात कर रहे थे जो सेल हुई थी सारी, और फर्स्ट ही जो इनका क्या बोलते हैं उसको सीजन था उसमें इन्होंने $100 मिलियन कमा लिए थे, और बहुत बड़ी बात स्टार्टिंग में। और आज ये इतना बड़ा ब्रांड है कि ये आज खाली मीडिया राइट जब बेचने की बात आती है तो ये $6 बिलियन के मीडिया राइट खाली बेचता है, जिसमें से अर्निंग जो डिवाइड जैसे भी कर लें वो आगे डिवीजन की बात है, लेकिन जो प्रॉफिट की मेन बात हो रही है। और बहुत सारी ऐसी क्रिकेट लीग्स हैं जिनके पूरी जो लीग है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर लीग की अगर बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, इस तरह और भी जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है या फिर बिग बैश है ऑस्ट्रेलिया की, तो इस तरह बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनकी निस्बत इसकी जो अर्निंग है उसका कंपैरिजन अगर हम क्रिकेट के ही अंदर जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क है। लास्ट टाइम ये जो स्टार्टिंग में वीडियो आई थी जो आईपीएल की थी, और आईपीएल का इन्होंने जिस तरह इफ्तिताह किया था उसकी मतलब बहुत हैवी सीन था। हर बार बड़ा हैवी सीन होता है, हर बार इस दफा तो बहुत ज़्यादा हैवी था। पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन इन्होंने लगाए थे उस पर, सिर्फ $1 ट्रिलियन बिलियन
तो मतलब हैवी सीन था, फुल ऐसे लग रहा था कि ये मतलब यकीन नहीं था आ रहा कि ये इंडिया इस तरह किया होगा इंडिया ने। ये तो ऐसे कोई लग रहा था जैसे कोई अमेरिका ने या कोई बड़ी कंट्री ने जो बिल्कुल स्टेबल है उसने किया ये। इंडिया भी अब स्टेबल कंट्रीज नहीं आते। नहीं वन ऑफ द मोस्ट आता है बिल्कुल आता है। अब तो आता है ना, अब तो बता भी रहा है कि मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले की बात करूँ कि पहले इससे करने की कोशिश करते थे लेकिन इतना बड़ा नहीं थे करते, लेकिन इस दफा इन्होंने तो बहुत हैवी सीन कर दिया। इनके हमेशा मेगा इवेंट्स होते हैं, जब आपको स्टेज देखते हैं ना बहुत बड़ा दुनिया में कहीं पे भी, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो लगता है कि वो अमेरिका में हो रहा है, या वो जो साउथ कोरियन बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनका है, या फिर वो किसी इंडिया में हो रहा है, किसी इंडिया के किसी और ऐसे वैसे शहर में हो रहा है। अगर इंडिया में नहीं भी हो रहा तो किसी इंडियन जो ओरिजिनेटेड कंपनी हो या फिर इंडियन ओरिजिनेटेड कोई भी आर्टिस्ट हो उसका कोई फंक्शन हो रहा है, इस तरह की फीलिंग आती है। अब इंडिया उस कैटेगरी में बड़ी स्पीड से ऊपर आ रहा है। जैसे एक होता था ना कि अभी बहुत बड़ा स्टेज है ये, वो माइंड में ये आता था हमेशा शुरू से, यार ये अमेरिकन स्टेज लगता है, इतने ग्रैंड स्टेज, ये सब चीज़ें अमेरिका की होती हैं। लेकिन अब वो चीज़ें बड़ी स्पीड से बदल रही हैं, उस लिस्ट में अब इंडिया का नाम बड़ी स्पीड से ऊपर आ रहा है। पहले भी मेगा इवेंट करते थे लेकिन वो खास कुछ कैटेगरीज में थे, जैसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड शोज होते थे बॉलीवुड के या बाकी जो इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। लेकिन अब वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अब वो क्रिकेट में आ रही हैं, अब वो ओलंपिक्स में आ रही हैं, बाकी स्पोर्ट्स में आ रही हैं, एजुकेशन में आ रही हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये सारी स्टेजेस में इंडिया बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा ओपिनियन था, देख के आपके साथ बड़ा अच्छा लगा। और देखते हैं अब ये कहाँ तक ग्रोथ जाती है कि क्या पाकिस्तानी PSL जो है IPL को compete कर पाएगा आने वाले टाइम में या नहीं। फिलहाल जो दोनों का ग्रोथ रेट है स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के मुताबिक जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फिलहाल PSL का ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है जब हम स्टैट्स की बेस पे बात करते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि ये जो मीडिया राइट्स बेचते हैं और उसके बदले में $6 बिलियन लेते हैं, तो जाहिर है अब एक कंपनी को वो दे रहे मीडिया राइट, तो अब वो खाली खर्चे के पैसे तो नहीं ले रही ना, उसमें से प्रॉफिट भी ले रही है, सब कुछ ले रही है। तो अगर ये अपना ही मीडिया बना ले, अपना ही नेटवर्क बना ले बहुत बड़ा, जिसमें ये खुद BCCI के पास कितना पैसा है, अगर ये खुद का अपना नेटवर्क बनाते हैं और वहाँ पे अपनी ये चीज़ें सारी ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसमें क्रिकेट लीग हो गई या फिर इंडिया के जो ऑफिशियल मैचेस हैं वो हो गए जो BCCI की तरफ से होते हैं, तो क्या वो ज़्यादा सूटेबल मॉडल नहीं? तब जब आपके पास विजन भी हो और पैसा भी हो और इस तरह की चीज़ें हो, इस हवाले से आप लोगों ने लाजमी बताना है इस मॉडल के हवाले से, क्योंकि अब देखना अब वो ले रहे हैं, अब वो अल्लाह वास्ते तो कर नहीं रहे, वो उसमें से प्रॉफिट भी रखते हैं और खर्चा भी निकालते हैं। तो जब इनके पास अपनी टीम होगी तो ज़ाहिर प्रॉफिट उस लेवल का तो नहीं लेंगे ना, अपना खर्चा निकालेंगे जिसमें टीम का खर्चा ये वो सारा और बाकी इनके खुद की जेब में आएगा, और ये दूसरों की जेब में इस तरह डाल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा BCCI का। हाँ, अब ये ज़रूर सवाल हो सकता है कि क्या वाकई में ब्रॉडकास्ट के लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहिए जो BCCI के पास है या उससे भी ज़्यादा चाहिए, ये अब एक सवाल है। इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इस हवाले से आप लोगों ने हमें लास्ट में गाइड करना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।